It's not difficult. So guys, here we are just going to start with the time and with the money portion. So the first question is there. Very difficult. No, it's not difficult. Let me tell you. Let me give you some examples. Let's suppose I got $1 and that was equal to 30. No, I should write it Pakistani. That was equal to 300 rupees, and I got $42. Oh, sorry, I'm writing pounds over here. क्या हो गया है दिमाग को? So $42 is going to be converted in 300 rupees. It will be go like a unitary method. Let's suppose $1 over here and 300 rupees over here. I'm gonna write $42 and the x is over here. Then I'm just going to multiply them. That will be like a unitary method in every question. Okay, so Simra, we are going with the unitary method over here, and we are not going to follow any of the particular rule because the unitary method is the basic method which will help to solve the ratios, percentages, and all the stuffs related to this. Got it? So I hope it would be clear to everyone that it is not a complicated topic. It's the easiest one, and let's start with the topic. And actually, the thing is, there is no introduction for this topic because of it that we have covered the ratio and proportion as well as the percentages. So we know about the things, and we do not have any of the particular new thing that is going to be in this topic. So I'm just directly going to start with these questions. Okay. So Ahmed goes shopping, and I know that he goes shopping because he has too much money. So in one shop, he buys shorts for $26.84 and a shirt of $13.97. How much does Ahmed spend altogether? And I think you can answer me easily because it will be quite simple. That 26.84, it's gonna be add to 13.97, and we would be having over here that going to be 13.97, and 7 plus 4 is 13. Oh, 11. So one is over here. Okay, so everyone is using the calculator. Oh my god. I think it's a paper one. Lamia can use the calculator, but no one else. In another shop, he buys 15 postcards for 46 cents each. Calculate total cost in dollars of the postcards. So it means the one letter postcard were costing 46 cent. So it means that I'm gonna multiply 15 by 46 in order to get the value of cent over here. So that's gonna be, oh, I got something to eat. So it's gonna be 690. Okay, Lamia, 690. So now it's a 690 cents, and when I'm going to divide it by 100, that's gonna be $6.9. Got it? Is that clear to everyone? Is it? Maham, you just joined the class. Oh, you are joining again. Amna, okay, got it. And what about Simra? Is that clear to you? No way. Why are we not using the unitary? Because it's not a unitary over here, beta. We are going to use the unitary in the next part. Actually, the thing is, that is quite simple. We can use it by the unitary method, but that was a simple calculation. That's why I did not use the unitary method. So I can say this that one postcard will be costing 46 cents and 15 will be costing X. So it's going to be like this. So it is going to be 690 cents and I'm going to divide it by 100 in order to make it $6.9. Got it? Got it, Simra? Okay. Now I'm just going to use the unitary method over here. The rate of exchange between pounds and the dollars was 1 pound would be equal to $2.50. Calculate total cost of postcards in pounds. So that at that place, I'm just going to use that it was 1 pound. So I'm just writing a pound over here and as well as a dollar over here.
So you can see that 1 pound was equal to $2.50. Yes, yes, Simra. Not in the second part, in the first, yeah, in the second part. Okay. And here would be, that was $6.9. So I'm going to write it over here. And the x's would be over here. So I'm just going to divide that. In that case, x is going to multiply with 2.5 and 6.9 is going to multiply with 1. That means x is going to be 6.9 divided by 2.5. So may I know the answer from anyone of you? Mustafa, you were wrong. I hope you have identified your mistake. 2.76. It means it's going to be 2.76 pounds. Okay. So in the next question, Imran is paid $16 per hour. 1 week. Do we have Maham over here? Maham, beta. Yes, 2.76. Okay. Simra, what do I have to reply? What are you talking about? Why divide by 100 in the first part? Actually, the thing is, that was a cost of cents. And when I multiply this 15 by 46, I got 690 cents over here. And they were asking me the answer in dollars. So that's why I just divided by 100. Got it? Simra, did you get it? Mm-hmm. Simra, beta, how many cents in $1? $1 equal to 100 cents. If you are getting your answer in cents, so how will you convert that in dollars? That is my question. Have you got it? Okay, question number two, part A. Imran is paid $16 per hour. 1 week he worked 35 hours. Calculate the amount he is paid for the week. He is working 35 hours and he is getting $16 per hour. It means if he is working 35 hours, so it means that I'm going to multiply 16 by 35 in order to get the amount in dollars. So it's gonna be what? I guess 560. 576? Oh my god, 576. How it would be 576? Amna, are you talking about next part? Imran is paid 20% extra per hour for working at the weekends. Work out the total amount Imran is paid for working 4 hours at the weekend. So 20% extra. So 20% extra means what it will be the per hour rate? I'm asking a question from you guys. What will be the per hour rate if he is working 20% extra per hour? If he's on working on a 20% extra per hour, so the previous per hour was $16. Now what will be the per hour? Okay, I got the one answer from Mustafa. How you guys are going to increase the 20% extra in the $16? Yes, percentage increase formula. Unity method, simply you can see that $16 would be completed 100%. Yes, Mustafa, you were correct. When you increase 20%, so it's going to be 120 and the x will be over here. Now you are going to multiply that
That means x into 100 and 16 into 120. That's going to be x equal to 16 into 120 by 100. So you got the value of x. What will be the x? What will be the x, beta? It will be 19.2. Okay. So it means that the new amount would be $19.2, and now I'm just going to multiply it by 4 because he is working 4 hours at the weekend. So 4 into 2 is 8, 4 into 9 is 36, 4 into 1 is 76.8 would be the final answer. Is it so? Am I correct or not? Okay, Mustafa. Girls, are you doing or not? I'm still not getting the answers from Simra, Amna, and Maham. Okay. Okay, Simra. I will check it. Maham, are you there in the class? I guess she's not there. And Amna, what about the answer? Is it correct or not? Okay, I'm just doing the part. So 1 pound would be equal to dollars. That is 1.88. Oh my god, she's going very fast. 1 pound would be equal to $1.8. And if I'm going to work with 270 pounds, $270 into pounds, so it would be x. So I'm gonna write x into 1.8. That would be 270 into 1, and it means that 270 is going to divide it by 1.8. So it means, what did I get? Simra told me 150, and Mustafa told me something different. Oh, so it means it is 150. So Mustafa, you were on the mistake side. I think that you were giving me the wrong answer, I guess. You were giving me the. Okay, what about question number three? So I got the answer in question number three as well. Before anyone solved that, I got the answer. So the exchange rate between the dollars and the euros is over here. Yes, 270 are dollars, not pounds. I did not write in the pounds. The pounds were missing. Can you see that? Hmm. $1 would be equal to 0.8 euros, and $275 would it be in euros? Okay, Simra, I am checking your speed as well. That's going to be 220. Okay. And what about question number 4? P goes on a holiday from France to UK. P exchanged 400 euros into the pounds. The exchange rate was 1 euro and 0.084. So the euros and the pounds. 1 euro equal to 0.845 pounds, and 400 euros would be what?
No, beta, calculator is not allowed in there. Now you are confused that how you are going to multiply that. Okay, so it's gonna be 338. I can show you the multiplication for the one question, that you have to just mark the whole numbers. Yes, Mustafa, you are correct. 400 is the whole number, and there is a whole number is 845. So you are just going to multiply 4 by 845. That's going to be 4 into 5 is 20. 4 into 4 is 16, 17, 18. 4 into 8 is 32. That's going to be 33. So you are just going to mark three zeros in front of this. Sorry, two zeros, because it's two zeros over here. So I mark two zeros and I write the point. Now three decimal place, the point means go backward three digits. So it means that it's going to be 338 over here. Okay. And what about question number 5? Can you guys solve that question? I think there was an issue from Maham's side. Maham, is that okay? Now, can you hear me? Okay, so we are doing question number 5, and I have given the question number 5 to solve. So everyone is trying, I guess. So I think that you should also try. Oh, Mustafa got the answer. That is 66.5. Yes, it was open by mistake, so I just saw it off. So Sophia earns 7.60 for each hour she works. She starts work at 7:45 a.m. and finishes at 4:30 p.m. She stops work for half an hour for lunch. How much does she earn for the day? Okay. First of all, let me tell you one thing, that PM and AM cannot be calculated together. Okay. So the PM time will not be counted, but the AM time would be considered as a 24-hour clock. So first of all, I am just converting this 4:30 p.m. and adding 12 over here. That's the basic science, that I'm just going to make it. It is going to be 16:30 in a 24-hour clock. Okay. And 7:45 would be the another time when she start working over there. So I'm just going to subtract that in order to identify how many hours did she work. So I'm going to write 16:30 like this and 7:45 over here. Now I'm going to subtract that, and for subtracting I would make it 5 and I will take 60 as a carry, because it is going to be 90 now, because it's a minute and it's an hour over here. So is it clear to everyone that 90 is going to subtract it from 45? That means it's going to be 45 over here. Is it clear to everyone? Let me know that. Okay. Then 15 minus 7 is going to be what? That means it is going to be uh, 8. Simra asked the question now. Simra beta, 4:30 is PM. It means it's a evening time.
and it's a AM. It means it's a morning time. And AM and PM cannot be worked together until or unless they are converted into 24-hour clock. So in order to convert every time in 24-hour clock, AM just AM. Oh sorry, AM will not be converted, but the PM time will be converted by adding 12. Okay, you got it. Okay, Maham, did you have any? Do you have any problem with this? Because you are not replying in the chat, so I think that is clear. It is clear to you. Okay. So 90 minus 45 is going to be 45, and 50 minus 7 is 8. It means she worked 8 hours and 45 minutes. But there is some problem. She stopped work for half an hour for lunch. It means she was not working on 30 minutes. Yeah. So I'm going to subtract 30 from here in the minutes. So it is going to be 18 hour 15 minutes over here. Okay. And what is the rate of hour? Because there is 8 hours. So I'm going to say this 8 hours multiplied by 7 by 60. Okay. And what about 15 minutes? How I'm going to charge for the 15 minutes? How I'm going to charge for the 15 minutes? Everyone is correct. 1.9 for 15 minutes. Okay. I would do 15 by 60 and multiply by 7.6. Is it okay with everyone? Unclear. 15 by 60 means you were saying, Simra, you were saying beta 1 upon 4. So 15 by 60 would be 1 upon 4. It's going to be 15 into 1 and 15 into 4. So that means 1 upon 4 for the for the whole time. So I'm going to multiply it by 7 by 60 in order to calculate by 15 minutes. Have you got it? Yeah. So the total amount should be 62.7, as Simra telling me again and again. Oh, sorry, Lamia telling me again and again that the total amount should be 62.7. Is it 62.7 for everyone? Has everyone got the same answer? Yes, beta. When you calculated, you did not convert what? You did not got the same answer. What you did not convert? I don't know how. Sometimes it happens. Sometimes, but not every time. Okay, okay, Lamia. So be attentive and don't try to do this at home. Okay. What about the another question that Marlon earns $1,500 each month. He pays rent for $525 each month. Okay. Find the amount he pays in a rent as a percentage of his earning. Marlon earns $15 each month. He pays a rent of $525 each month. Find the amount pays in rent as a percentage of his earning. It was quite simple. 525 divided by 1500. It's going to be multiplied by 100. Oh my god. It is 35%. So, what about this? Question number 6. I think it's different. It's different and it's complicated. I think so.
Yes, I'm confused. You are confused. You are confused. It's time to think that when you are confused, so it means everyone is going to be confused over here. I think so. Okay, guys, have you read the question? Just a minute. Okay. Okay, someone gave me the answer, and I'm not sure that it's correct or not. Mom, how did you get the answer? Everyone is got getting the answer at 2.38. Amy buys three drinks at 1.86 each, and I drink for 2.04. She pays for the four drinks with a $10 note. How much change would she receive? Okay, let me check. So 3 is going to multiply with 8, 1.86. Okay, I was just reading I that is one drink. So it's gonna be 2.04. Now what is the total amount? Did anyone calculated that one? Or I have to do this? 7.62. Oh, 5.58. How? I don't think so. And 1.86 is going to multiply with 3. That's going to be 3 into 6 is 18. 3 into 8 is 24. I'm not getting. Oh, acha, 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 I got it. So then you just subtracted 100 minus 7.62 and you got 2.38. Okay, there is a question of ratio, the previous class topic. $180 is shared between Ali and Ben, so Ali's share and Ben's share is 4:5. Find Ali's share. Yeah, I got it. 10 minus 7.62. Can anyone answer me for this question? That's 6 part B. Ali's share. Okay. Lami, I'm noting your answer, but I'm not telling in the class because that everyone try to do this. Oh my god. Okay. Okay, Lamia. Okay, Mustafa. Let others student guess about the answer. Okay, beta, what is the answer? Amna, Maham, and Simra. What should be the answer? Okay, Amna got the same answer as the Mustafa got, but Lamia still has a different answer. Okay, we are gonna check that. What about Simra? Okay, Maham. Yeah, I know that. What you got, but I'm not telling the answer right now. Simra, are you there? No, no, not getting.
That was quite simple, beta. It would be 4x, it would be 5x. The total amount should be 4x plus 5x equal to $180 because that was going to share between them. So it's going to be 9x into 180 and x would be $20. But there is Ali's share, so it means that Ali's share was 4x. So I'm gonna put it 20 over here. So it is going to be $80. And Lame, you got a mistake. I know that you got 20, but 20 was not answer. They were asking about the Ali's share. So you need to put 20 in 4x. Got it? Have you find out your mistake? Because they were asking about Ali's share. They were not asking about the value of x. Okay. Simra, did you get it? Should I move to the another question? Okay. Let me check how many questions do we have. Oh. We have a lot of questions, but in every question there's a, you can see that same thing. So just leave that one. Question number 7. I would put it in an assignment so you can solve it by your own because these are the simple questions and I don't think so it would be having any problem with you. But there is a question which I want you to solve with me. That is question number 14. It is given that $100 is equivalent to 56 pounds. Use this information to draw the conversion graph between the pounds and the dollars. That is quite technical, which I am just going to help you out over here. So, better listen to me very carefully because you do not listen to me. And the question is over here $100 were equal to 56 pounds. That was the term they have defined. So, the $100 is over here and 56 pounds would be over here. That's going to be 50, 52, 54, and 56 it would be over here. So in front of 100, I am marking 56 over here. Okay. First point I got, and the second point which I need to, that would be 0 and 0. Because in $0, the pounds would be 0 in front of that. So I got 2 points. The first one is over here, which they have told me in the question. And the first point and the second point, I found it as the origin one. So I got 2 points and I need to draw the graph over here and I'm just making a straight line which are intersecting both of the points. Okay, I got it. Now I have drawn a line over here. It will be my conversion line. Got it? Imaginary scale, not an imaginary scale. I just have to draw that line by using the points. That is not an imaginary scale over here. Now the question is use your graph to convert $64 to pounds. So where is my $64? The $62 and $64. So I'm just going to take a line. No, it's not 36. I think so. It's not 36. I'm going to take a line to this line. That is my $64. And in front of this, I'm gonna throw the line to this part, and I am getting, I guess, 38. Yeah, 38 pounds. Okay, Maham, did you get it? Okay, the meeting is going to end right now. So this topic would be having a 17 questions, and I'm gonna put that questions in the Google Classroom. So after that, you guys are going to solve that for the practice. It was a difference of 2 pounds. Ha ha ha. Oh, 2 pounds. 2 pounds. बहुत ज़्यादा होते हैं भाई पाकिस्तानी में. ठीक है. चलो. Okay. So you guys are going to join in the 10 minutes break. I'm ending this session.
के साथ सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा फिर। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक है, मतलब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, और वो भी ऑलमोस्ट आप बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि आपने परसेंटेजेस पहले पढ़ लिया है। तो आपने परसेंटेजेस पहले पढ़ लिया है तो आप उन चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर अप करते हुए आगे निकल जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब टाइम नहीं लगेगा, टाइम टेकिंग टॉपिक्स मैंने करवा दिए सारे। अच्छा, टाइम और टेम्परेचर में जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने उस वक्त भी सिमरन ने मुझसे पूछा था तो मैंने बताई थी। एक सवाल आया था बीच में टाइम वाला उसके दौरान, ठीक है। तो वो टाइम और टेम्परेचर में जाने वाली खास बात यह है कि टाइम जो है वो कभी भी पीएम और एएम के दरमियान एडिशन सब्ट्रैक्शन पे नहीं जाएगा, यानी कि देयर विल बी नो ऐड एंड देयर विल बी नो सब्ट्रैक्ट। आप हमेशा याद रखिएगा बात मेरी, कि 24 आवर क्लॉक जो होती है उसमें टाइम आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कभी नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि एएम पीएम में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, यानी कि इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज़ प्रोहिबिटेड और इधर अलाउड है। तो उसमें मुझे ये करना होता है कि मुझे हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। अब प्रॉपरली डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि लेट सपोज अगर मैं 24 आवर क्लॉक की बात कर रहा हूँ तो इसमें काम मुझे कैसे करना होगा, ठीक है। एएम का टाइम 24 आवर क्लॉक में सेम रहता है, लेकिन पीएम का जो टाइम होता है उसमें आपको +12 करना होता है, तो फिर वो आपके पास सेम बन जाता है। सही है, यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि एएम का टाइम जो है वो सेम रहेगा, लेकिन पीएम का जो टाइम होगा उसमें जब आप +12 करेंगे तो आपके पास सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि हमें काम किस तरह से करना है। काम इस तरह से करना है भाई कि जैसे कुछ सवाल तो टेम्परेचर वाले हैं। अच्छा, ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 27 सवालों का है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इस क्लास में इसको कंप्लीट कर लें स्पीड अप करके तो आप लोग सब अटेंटिव रहेंगे, तो ये टॉपिक शायद हो सकता है इसी क्लास में खत्म हो जाए, अगली क्लास में हम सिंपल और कंपाउंड पे चले जाएं। द टेबल शोज द रिकॉर्ड्स minimum monthly temperature in Celsius in Vostok and London, और find the difference between the temperature in Vostok and London in July। वॉस्टॉक और लंदन का जुलाई के टेम्परेचर का डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे। तो जुलाई यहाँ पर है इस तरफ, और इसके दरमियान दो अलग अलग सिटीज़ की बात हो रही है, तो उसका डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। तो भैया एक का 7 है और एक का 74 है, और डिफरेंस निकालने के लिए मुझे मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करूंगा, सो इट्स गोना बी 7 + 74, और ये हो जाएगा मेरे पास 81। 81 सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इन वॉस्टॉक इन फेबररी एंड जून। फेबररी और जून की बात कर रहा है जी बेटा मुश्तबा, ठीक है। फेबररी ये दिया हुआ है वॉस्टॉक का, और जून आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -47 है, माइनस करके माइनस का 71 कर देंगे आप। सो -47 और +71, जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आने वाला है डिफरेंस? 71 - 47 इज, कैन एनीबॉडी गोइंग टू टेल मी? दैट्स 24। यस, करेक्ट। सो व्हाट अबाउट दिस? द टेम्परेचर इन सेल्सियस एट द मिडनाइट ऑन 10 कंसेक्यूटिव डेज पर 10 दिनों का टेम्परेचर दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। सो दे आर आस्किंग अबाउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर, द डिफरेंस। So the difference would be, what will be the highest value over here? Oh my god, I got the answer. But I was asking what will be the largest value over here? Yeah, it's 4. And what will be the least value over here? Okay. Okay, Mustafa, I'm not writing it now. Let the girls to answer it. Okay. Lamia, okay, you are correct. What about the others? Where are the others? Simra, what is the least value over here?
ओके ओके ओके, सर फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस लार्ज कैसे जाए आ जाएगी? डिफरेंस तो डिफरेंस है ना बेटा, लार्ज ही तो आएगी। कौन से वाले का पूछ रहे हो? अच्छा पहले सबर करो, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। भाई ये वैल्यू मेरे पास आई है -3, तो आई एम गोना डू इट 4 + 3, दैट्स गोना बी 7 सेल्सियस। अच्छा अब ज़रा बाकी बच्चे नीचे वाला पार्ट भी चेक करें और मुझे उसका आंसर दीजिएगा सुकून से, जब तक मैं सिमरा के क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। सो सिमरा व्हाट वर यू आस्किंग? हाँ, -74 + 7 होना चाहिए। ओके बेटा, हाउ, लेट मी नो वन थिंग, दैट हाउ डू यू कैलकुलेट द डिफरेंस? What is the basic formula for the difference? We have discussed it about. Okay, Mustafa, I am checking that one. Simra, answer me first. That how do we calculate the difference? By subtracting. And what is the rule for the subtraction? What you are gonna do? You are gonna subtract the large value, you are gonna put the large value at the place first, and the smallest value at the place second. It means the difference would be calculating by large minus maximum minus minimum. Is, is it? Yes. So July temperature you can see in the Vostok was -74 and the London temperature was 7. So what is the largest value over here? Is it 7 or -74? No no, it's not impossible, it's possible. बेटा देखो इसमें हो क्या रहा है, बात को समझो। डिफरेंस का मतलब पता है आपको क्या है? लेट मी टेल यू। एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन के ऊपर, ये देखो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दी। इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं -74 लिखा हुआ होगा और यहाँ पे कहीं 7 लिखा हुआ होगा और बीच में बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स होंगे। तो डिफरेंस होता है हर इंटीजर वैल्यू के दरमियान आने वाली वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से -74 से लेकर +7 तक बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी, क्योंकि ज़ीरो तक जो है ना, ज़ीरो तक तो 74 वैल्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी होंगी और उसके बाद मज़ीद 7 वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस 81 ही होगा ना बेटा। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके मैम, आई एम चेकिंग दैट वन। ओके, so we were on question number 2, and question number 2 was clear, part A. But in part B, the question was how many of these temperatures are within 2.5 degrees Celsius or 1 degree Celsius. So you are just going to count that temperatures which are between 2.5 and 1. So 2.5 and 1 would be number of temperatures. How many are they? So I guess it's gonna be 3. No, it will not be 3. Sorry, I made a mistake. It is going to be between, in between, इन बिटवीन 2.5 और 1 के बीच में यार। 2.5 और 1 के बीच में तो मतलब एक ही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, एक आ सकता है और उसके बीच में तो कोई टेम्परेचर आ ही नहीं रहा ना, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ 2 ओवर हेयर, बिकॉज 2 तो आ ही नहीं रहा, -2 आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ दीज टेम्परेचर, हमें इसी टेम्परेचर्स में से तलाश करना है सिमरा, हमें इन्हीं टेम्परेचर्स में तलाश करना है। दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं, सो आई गॉट 2। या आई गॉट 2 वैल्यूज़। ओके, सारा सेट्स ऑन अ जर्नी, Sarah sets out on a journey at 10:50. It means that she's going to start her journey at 10:50. She travels 65 kilometer at an average speed of 20 kilometer per hour. At what time does she stop her journey? Does she complete her journey? So it is quite simple that we have discussed about the rate, यानी कि speed distance time हमने पढ़ा हुआ है. So I'm just going to calculate speed equal to distance upon time, the exact time she would take to cover the 65 kilometers.
Then after that, I am going to work with the time. So the speed was 20 kilometers and the distance was 65 and the time is unknown. So I'm just calculating the time over here. That's going to be 65 by 20 and I guess it will be okay. Lamia, I'm checking that one. So it's going to be 5 into so you guys did it directly 3.25. So beta 3.25 means it is going to be 3 hour and 0.25 means that's going to be 1 upon 4 like just a second ma'am, I'm answering your question. So 20.25 means that's gonna be 15 minutes, 3 hour and 15 minutes and 10:50. So 10:50 she start going there and adding over here means that would be 65 and 13. Now I'm going to subtract 60 from here and adding 1 over here. So it's going to be 14:05. Okay. I didn't 12 o'clock. S- just a second. Yes. Yes. Okay. Uh, sorry, Maham का answer, sir, it is 25. Yeah, 325 add नहीं होगा. Why it should be? Because you just calculated it 3.25. So means beta that's gonna be 3 hour and 0.25 into 60 is going to be 15 minutes, I guess. 0.25 means it doesn't mean that it's going to. Yeah, actually the thing is Maham, बेटा देखो यहाँ 3.25 लिखा हुआ है ना. सो इट मीन्स ये तो 3 आवर्स हो जाएंगे और 0.25 भी आर का ही पार्ट है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे मिनट्स पे कन्वर्ट करने के लिए. इट्स गोइंग टू बी 15 मिनट्स. हाँ मैम, हम तुम्हारा ही आंसर चेक कर रहा था. हाँ मैं आप ही का क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ. आप लोग जब तक ज़रा ये वाला सवाल ट्राई करो, नीचे इसका जो पार्ट भी आपको नज़र आ रहा है. मैं जब तक ज़रा ऊपर वाला सवाल चेक कर लूँ कि क्या है. Where is row of papers? 12 आवर्स में सॉल्व हो सकता है, मैंने 12 में ही किया. ओ 12 आवर में सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं बेटा 12 आवर में कभी भी सॉल्व नहीं करते. एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी 12 आवर में अलाउ नहीं है पेपर में. अच्छा मुझे ईयरली देखने हैं और ईयरली में मुझे मैथ्स देखना है. मैथ्स में नवंबर 2010 देखना है. मल्टी व्यू में चले जाते हैं, नवंबर 2010. अच्छा, और पेपर वेरिएंट 1 2 है ये. मार्किंग स्कीम में भी यही है, पेपर वेरिएंट 1 2 है. सो आई एम जस्ट चेकिंग दैट वन.
हम बेटे मुझे अभी इसको सही से कंफर्म नहीं हो रहा कि दैट हाउ इट इज़ 6 आर विद इन 2.5 सेल्सियस और 1 सेल्सियस। 1 सेल्सियस और 2.5 सेल्सियस के दरमियान कितने टेम्परेचर्स हैं? द आंसर इज 6, यू आर सेइंग दैट आंसर इज 6, बट मुझे यहाँ पर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, मुझे इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। समटाइम इट हैपेंस कि केम्ब्रिज में सवाल आ जाता है ऐसा, लेकिन एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि इज इट द करेक्ट वन और द रॉन्ग वन। डिड एनीवन गेट द आंसर टू बी? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी जो है उसका आंसर किसी भी और बच्चे का, किसी भी और बच्चे का 6 आया है। हाँ आया तो नहीं है। T+T10 मान क्या कहना चाह रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा। हाउ 6? आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट इट। समटाइम इट हैपेंस बट नॉट टाइम। और इसमें लिखा हुआ भी यही है एग्जैक्टली कि हाउ मेनी ऑफ दीज टेम्परेचर्स आर विद इन 2.5 ऑफ, हाउ मेनी ऑफ दीज टेम्परेचर्स आर विद इन 2.5 ऑफ 1। Yeah, I'm also confused about it. Let me check that one. 2.5 of 1. So, if it is going to be like this, 2.5 of 1 means multiply of 1. So, it's going to be 25 by 1. So, it will be 5 into 5, and that's going to be 2. So, it will be 2.5. Okay, just leave that part. I am just going to check that one, and I'm going to just tell you in the next class. I'm just marking it over here. And for remembering, I'm just highlighting this one as well. Because I have to check it out that what they have made it and what they were just trying to write. Maybe sometime it happens that in the examiner report they just figured it out that we just write wrong thing in the marking scheme, or we just write the wrong question in the question paper. So I have to read the examiner report for this one. Okay, beta. So I'm just marking this question over here that is incomplete and unidentified, and according to me, I'm gonna answer it in the next class. Okay. So for that, I will going to go through with the examiner report. Is T+T10? Yeah, exactly. It is look like an expression, but they were just trying to write something over here. So what they are just going to write, I have to check that one. Who is this? 2.5 less than Simra. How did from where did you get that answer? Not have. Yeah, actually the thing is Google. No, I have to confirm it. Just figure it out. I would figure it out by checking the examiner report over here. Okay? Just leave that question. Just go for the next one. What about part B? Is it completed or not? Confused. Okay. Uh, Kevin take T minutes to travel to work.
Jane travels to same distance to work but goes 10% faster than Kevin. Find an expression in terms of t for the answer for the number of minutes that Jane takes to travel to work. Kevin take t minutes to travel to work. Okay. Jane travel the same distance to work but goes 10% faster. Okay. Find an expression in terms of t for the number of minutes. Okay, boss. So for Kevin, I'm calculating something. केविन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं s इज इक्वल्स टू डी ओवर टी. तो केविन का जो टाइम है वो कैपिटल टी है, तो उसकी स्पीड मैंने ऐसी अननोन छोड़ दी, डिस्टेंस लिखा और कैपिटल टी लिख दिया. अच्छा, अब उसने यहाँ पे कहा है कि जीन ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस टू वर्क बट गोज 10% फास्टर देन केविन. अगर केविन की स्पीड से हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, तो केविन की स्पीड एस थी और इट वॉज 100% complete. But when I'm just going to increase that by 10%, so it's gonna be x, and I'm just calculating the value of x over here. So it's gonna be s 110 divided by 100 इक्वल टू x. अब ये जो है स्पीड हो गई जेन की. तो जेन की स्पीड के लिए फॉर्मूला वही होगा d अपॉन टी. ठीक है ना. अच्छा, अब फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है भाई कि दोनों का डिस्टेंस तो सेम था. उसने ये बताया मुझे कि जनाबे वाला कहाँ गया, सॉरी. हाँ, कर रहा हूँ बेटा, मैं कर रहा हूँ जस्ट अ सेकेंड. इट्स गोइंग टू बी टी. अच्छा, Jane travel the same distance to work but goes 10% faster than Kevin. Find an expression in terms of t for the number of minutes that Jane take to travel. यानी कि ये जेन का टाइम है स्मॉल टी. ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैं आपको समझा देता हूँ. देखो, जेन की जो स्पीड इस वक्त आपको नज़र आ रही है वो ये वाली है. यहाँ लिखी हुई है जेन की स्पीड एग्जैक्टली. तो जेन की स्पीड को मैंने ये लिख दिया एस की जगह पे, दैट इज़ गोइंग टू बी 110 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. अच्छा, डिस्टेंस जो है यहाँ पर वो सेम था, तो उसको मैंने केविन के डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लिया एंड दैट वाज एस टी. तो मैंने डिस्टेंस की जगह पे, जेन के डिस्टेंस की जगह पे उसी को प्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय स्मॉल टी हो गया. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने एक्सप्रेशन किस तरह बनाई है? देखो, ये आ गई है स्पीड 10% इंक्रीज करने से. ये जेन की स्पीड है. ठीक है. डिस्टेंस जो कि दोनों का सेम था, तो मैंने केविन के पास से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. और स्मॉल टी मुझे कैलकुलेट करना है जेन का. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? maham गॉड, maham सेज यस. एंड व्हाट अबाउट द अदर गाइस? सिमरा एंड आमना, you both are missing right now. No, what? No, you did not get it. अरे पूरा लिखो ना. यस, यू गॉट इट. हाँ, अब सही है ना. भाई देखो, सबसे पहला काम तो ये करो, स्पीड को बढ़ा दो 10% से. जेन की स्पीड मैंने बढ़ा दी 10% से. देखो, ये वाली स्पीड ऑफ जेन समझ में आई तुम्हें? नई वाली, ये क्लियर है? आमना आप भी बताओ बेटा, क्लियर है आपको? 10% से इंक्रीज करी है ना हमने स्पीड. एक्स की वैल्यू निकल गई. आमना, आई डिड नॉट गेट द आंसर फ्रॉम योर साइड. ओके. अच्छा, अब देख लेते हैं. देखो, दोनों का डिस्टेंस सेम था, तो मैंने एक काम किया, केविन के पास से, केविन की जो एक्सप्रेशन बनी थी वो ये वाली थी ना, इससे मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. कैसे कैलकुलेट किया? टी इधर डिवाइड हो रहा था, कैपिटल टी, उधर जाके टी मल्टीप्लाई हो गया, डी की वैल्यू मुझे मिल गई एस टी. ये वाली बात क्लियर है? ठीक है. अब जेन की स्पीड के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास, ये वाला. इसमें स्पीड की जगह जेन की स्पीड डाल देते हैं, जो नई स्पीड मैंने निकाली है वो डाल दी मैंने यहाँ पे. ठीक है.
इसके डिस्टेंस की जगह मैंने केविन से डिस्टेंस निकाला था, वो भी मैंने डाल दिया एस टी, और इसका स्मॉल टी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया फॉर्मूले में। इज दैट क्लियर नाउ? यस। व्हाट अबाउट सिमरा? बेटा वो मैंने अजम्पशन जो लगाई है 100 एज्यूम वाली, वो तो वही है ना जैसे परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। उसने बोला ना 10% फास्टर, इसका मतलब 10% इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने उसको उसी तरह से इंक्रीज कर दिया। हम ऐसे ही तो इंक्रीज करते थे परसेंटेज। हैव यू फॉरगॉट दैट? हाँ सही है। सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट किया, समझ में आया सबको? अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने स्मॉल टी को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आपको स्मॉल टी को सब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनेगा स्मॉल टी सब्जेक्ट, देखें ज़रा। आप सारी चीज़ों को उस तरफ ले जाएं, टी को वहाँ ले आएँ। स्मॉल टी वहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है एस टी। 100 यहाँ डिवाइड था, यहाँ जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 110 एस मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल टी बन जाएगा 100 टी डिवाइडेड बाय 110। ये बात क्लियर हो गई है बेटा? देख के बताइए मुझे। ये क्या बोल रहे हो मुश्तबा? मुश्तबा ये क्या बोल रहे हो बेटा, समझ में नहीं आया मुझे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। सिमरा आपको समझ में आए? हाँ तुमने चेंज ही कर दी प्लेसेस बेटा, यही मुझे नज़र आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई इज अनक्लियर, रेस्ट इज अंडरस्टूड। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर एस 110 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू एस टी डिवाइडेड बाय टी। पहले टी को इधर ले आते हैं, टी मल्टीप्लाई हो रहा है एस इंटू 110 के साथ, और एस टी इंटू 100 के साथ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसे क्या करूँगा, टी इज इक्वल टू एस टी इंटू 100 डिवाइडेड बाय एस इंटू 110। सही है, आई गॉट इट। द above is unclear. विच above बेटा? विच above आर यू टॉकिंग अबाउट? द फर्स्ट स्टेप ऑन द साइड, स्पीड बढ़ाने वाला। स्पीड बढ़ाने वाले की बात कर रहे हो? आप एक काम करो ना, आप इस तरह समझो कि जैसे 30 रुपीज़ हैं, 30 रुपीज़ को 10% बढ़ाना है। आप कैसे बढ़ाती, 30 के सामने आप 100 लिखती, और दूसरी तरफ 110 लिख देती 10%। फिर आप एक्स लगाती और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती, हाँ 130 हो जाता। 10% बढ़ाना था, 130 कैसे होता, 10% बढ़ाना था ना। 10%, सर ये आसान यूनिटी मेथड से भी तो हो सकता था। अबे आसान से ही तो किया है, सारे परसेंटेजेस के सवाल ऐसे ही किए थे। हाँ सिमरा, आई वाज टॉकिंग टू यू। आर यू देयर बेटा? सो आप कैसे बढ़ाती, इसी तरह से बढ़ाती ना आप, जिस तरह से मैंने लिखा है। आप 10% से कैसे इंक्रीज करते उसको, ऐसे ही करते। तो अब देखो, अब 30 की जगह पे स्पीड लिखी हुई है, तो मैंने स्पीड को 10% से इंक्रीज कर दिया। गॉट इट नाउ? एक्स की वैल्यू पता करनी थी मुझे।
एक्स यहाँ पे स्पीड है ना भाई, ये स्पीड है और ये परसेंटेज है। तो एक्स स्पीड हो गई किसकी, जेन की, तो जेन की स्पीड आ गई। जेन की स्पीड होगी केविन की स्पीड के 110 डिवाइड बाय 100। ये जो एस है वो तो उसकी स्पीड है ना, केविन की। केविन की स्पीड 100% कंप्लीट थी, जेन की स्पीड एक्स हो गई, उसको मुझे 110% से बढ़ाना था तो मैंने एक्स कैलकुलेट कर लिया। तो ऊपर वाली स्पीड किसकी है, आई एम रियली कंफ्यूज। ऊपर वाली स्पीड केविन की है ना बेटा, देखो मेरी बात सुनो, ये केविन की स्पीड है जो कि 100% कंप्लीट है। अब जेन की स्पीड एक्स है, वो 10% बढ़ी हुई है, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को सब्जेक्ट बना लोगे तो आपको जेन की स्पीड मिल जाएगी। सही है। नो। ओके, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगा। यहाँ बीच में तुम्हें आज क्या है, टुडे फ्राइडे, कल तुम्हें मैं कॉल पे लेकर समझा दूंगा, जूम पे मैं बुलवा लूंगा तुम्हें किसी टाइम में, जब तुम अवेलेबल हो तो मुझे बताना, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। इट वुड टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स हार्डली। ठीक है। ओके बेटा, टिल देन हम यहीं तक रखेंगे अभी इसको। और मैं वो वाली जो पुरानी फाइल है वो मैं आई एम जस्ट गोना पुट इट इन द गूगल क्लासरूम, माय माइंड इज नॉट वर्किंग नाउ। ओके, नो इशू बेटा, कोई मसला नहीं, मैं कल समझा दूंगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो मैं अब अगली क्लास में इसके आगे से ही स्टार्ट करूँगा। सो आई एम वी आर जस्ट वर्किंग इन दिस टॉपिक राइट नाउ। सो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम संडे की क्लास में इस टॉपिक को ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चीयर्स एंड चाओ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।